हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम वेव ऑप्टिक्स चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट चौका नंबर 4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज यूज्ड इन ए यंग्स डबल slit experiment. One of the slit is covered by a transparent sheet of thickness 1.8 into 10 to the power minus 5 meter made of a material of refractive index 1.6. How many fringes will shift due to the introduction of the sheet? 20, 18, 22, 24. A parallel beam of green light of wavelength 546 nanometer passes through a slit of width 0.4 mm. The transmitted light is collected on a screen 40 centimeter away. The distance between the two first order minimum is 1.5 mm, 2.0 mm, 1.1 mm, 2.2 mm. Two sources are called coherent if they produce waves of equal wavelength, of equal velocity, having same shape of wavefront, having a constant phase difference. Question number 4. If Young's double slit experiment is performed in water, the fringe width will decrease, the fringe width will increase, the fringe width will remain unchanged, there will be no fringe. Solution. Question number 1. A monochromatic light of wavelength 600 nanometer is used in a double slit experiment. The one of the slit is covered by a transparent sheet of thickness 1.8 into 10 to the power minus 5 meter made of material of refractive index 1.6. Having how many fringes will shift due to the introduction of sheet? 20, 18, 22 and 24. एक डबल स्लिट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दो स्लिट, इधर दिस इज स्क्रीन, initially no transparent sheet is applied. A central maximum at C. The distance between two slits is D. Suppose this slit is S1, this is S2, और ये distance D, स्लिट और इसके बीच का, तो जो रे है इस केस में S1 C इज इक्वल टू S2 C, रेज इंटरफेयर करेंगे और सेंट्रल मैक्सिमा C पर बनेगा। अब हमने इस स्लिट में एक इंट्रोड्यूस कर दिया है, इसको कवर कर दिया है T थिकनेस की ट्रांसपेरेंट शीट से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। अब ये C जो है शिफ्ट हो जाता है C डैश पर,
and this is x. Central maxima is here. x अगर यहाँ पर n स्लिट शिफ्ट होती हैं तो x d by capital D, that is n lambda. Number of slits n lambda. और S2 C dash minus S1 C dash is equal to mu minus 1 into T. Phase difference this phase difference is equal to x d by d, then mu minus 1 into T. This is equation 1, this is equation 2. From equation 1 and 2, mu minus 1 into T is equal to n lambda, or n is equal to mu minus 1 into T by lambda. म्यू की वैल्यू है 1.6, 1.6 माइनस 1, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और लैम्डा की वैल्यू है 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर या 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। 0.6 into 1.8 into 10 to the power minus 5 divided by 6 into 10 to the power minus 7. 6 into 18 into 10 to the power minus 7 by 6 into 10 to the power minus 7. 6 से 6 क्रॉस हो गया, 17 10 to the power minus 17, 10 to the power minus 17, this comes to 18. तो 18 slits जो है fringes will shift. B is correct option. Question number 2. A parallel beam of green light of wavelength 49 nanometer passes through a slit of width 0.4 mm. The transmitted light is collected on a 40 centimeter away screen. The distance between the two first order maxima is 1.5 mm, 2 mm, 1.1 mm, 2.2 mm. Lambda 546 into 10 to the power minus 9 meter. Width is 0.4 into 10 to the power minus 3 meter, or 4 into 10 to the power minus 4 meter. Or this distance D is 0.5.
4 meter or 4 into 10 to the power minus 1 meter. एक सिंगल स्लिट This is slit, screen, dia of the slit A is 4 into 10 to the power minus 4, or this is D distance 4 into 10 to the power minus 1 meter, or lambda is 546 into 10 to the power minus 9 meter. First minima, suppose this is at theta degree, this is first minima in upper side, or similarly first minima in lower side. This distance x to be calculated, x. A sin theta is equal for first minima lambda, for first minima if theta is small, the sin theta is approximately equal to theta, so A theta is equal to lambda, or theta is lambda by A. This is also theta, तो 2 theta की वैल्यू हम निकाल लें, 2 theta, तो 2 theta is equal to lambda by A, and 2 theta is equal to x by d lambda by A, 2 lambda by A. तो x की वैल्यू आ जाती है 2 lambda d by A, वैल्यूज पुट कर दें, 2 into 5 4 6 10 to the power minus 9, और d 4 into 10 to the power minus 1, और a की वैल्यू 4 into 10 to the power minus 4, 4 into 10 to the power minus 4, 4 से 4 क्रॉस हो गया, 2 9 10 into 10 to the power minus 6 meter, और 1.092 10 to the power minus 3 meter, और 1.092 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power 3 mm, or 1.092 mm. This is approximately 1.1 mm. So distance between the two first minima is 1.1 mm. C is correct option. Question number 3.
two sources are called coherent if they produce of equal wavelength, equal velocity, having same shape of wavefront, having a constant phase difference. जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं वो कहलाती हैं जब उनके जो प्रोड्यूस करती हैं वो वेव्स उनके में फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, तो उनको हम कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं. डी इज करेक्ट ऑप्शन. Question number 4. If the Young's double slit experiment is performed in water, the fringe width will decrease, the fringe width will increase, the fringe width will remain unchanged, fringe width will be, there will be no fringe. Suppose in air या vacuum में wavelength is lambda, wavelength of wave in vacuum is equal to lambda. तो फ्रिंज विड्थ, इस केस में फ्रिंज विड्थ इन वैक्यूम वो होगी डी लैम्डा बाई डी, जहाँ डी कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड फ्रिंज, कैपिटल डी जो स्क्रीन और फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस है, और डी जो दो फ्रिंजेस हैं उनके बीच की डिस्टेंस है. डी वेवलेंथ ओ वेव इन वाटर, इस वेव की अगर इसको वाटर में हम ले जाएं पानी में तो वेवलेंथ वो हो जाएगी म्यू से लैम्डा बाय म्यू. लैम्डा डब्लू विल बी लैम्डा बाय म्यू. तो फ्रिंज विड्थ इन वाटर डी लैम्डा डब्लू बाई डी और डी इंटू लैम्डा बाय म्यू डी, 1/म्यू डी लैम्डा बाय डी. इस तरह से फ्रिंज विड्थ म्यू की वैल्यू 1 से अधिक है, इट मीन्स फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज. तो ए इज करेक्ट ऑप्शन.